Hello champs, welcome back to Math Learning Studio. Today we will be discussing about the coordinate geometry and we will learn the applications of the distance formula. Yes, we are continuing this series. In the previous two videos we discussed about the applications of distance formula. First क्या थी? Very simple, to find the distance between 2 points and to find any missing coordinate when the distance is given, right? Yes. Then in the just previous video we discussed about how do we identify the type of triangle when 3 vertices or 3 points are given with the coordinates. Today we will take that discussion further and understand how do we identify the type of quadrilateral when you will be given of course 4 vertices. So क्या होता है इसमें कि आपको 4 वर्टेक्स दे रखे होते हैं क्वाड्रिलेटरल के. Okay, they may be named as A, B, C, D, and you will be asked to find the type of that quadrilateral. Type of that quadrilateral कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है. वो कैसे फाइंड करेंगे हम भाई? We are applying distance formula. तो distance formula का मतलब क्या है? To find the distance between two points. और 2 point distance का मतलब क्या है? Length of that line segment. Yes. So in this, what we'll do is we will find the 4 sides AB, BC, CD, DA. All 4 sides find कर लेंगे हम using the distance formula. All right. When we find all the 4 sides, then we can have 3 kinds of categories और 3 तरह की possibility बन सकती है. पहली क्या होगी भाई? Maybe you may get the 2 pairs of adjacent sides equal. Now what do you mean by adjacent sides? Yes, एक बार देख लेते हैं. 4 साइड्स है क्वाड्रिलेटरल में, राइट? जो साइड्स एक वर्टेक्स को शेयर करती हैं, the sides which have one vertex common are called adjacent sides. मतलब AB और BC, B कॉमन हो गया, AB और AD ये भी कॉमन हो गया, A यहाँ पे, ठीक है. So these two are adjacent, these two are same way BC और CD adjacent, CD और DA adjacent. It means there can be 4 pairs of adjacent sides. हमें क्या चाहिए उसमें से? कोई भी 2 पेयर adjacent sides के इक्वल हो चाहिए. Then if it is like this, then you will come to know directly only, here only you will come to know कि this quadrilateral is a kite. Kite की शेप याद है आपको? ये 2 साइड्स इक्वल होंगी और फिर ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. So this one pair of adjacent, this is second pair of adjacent sides. ठीक है. So ये मालूम पड़ गया पहले से ही, काइट हो गया भाई. Then first condition gone. Second हम यहां आ जाते हैं. We may get 2 pairs of opposite sides equal. Now what are opposite sides? Well, just the opposite of or the reverse of adjacent. Adjacent में क्या था? One vertex common. Opposite sides will not have any vertex common. मतलब AB and CD are the opposite sides. और ऑपोजिट का मतलब एक और भी होता है आमने सामने. आई एम अपोजिट टू सम पर्सन मींस वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. आमने सामने भाई दोनों, ठीक है. देन BC एंड DA दे विल आल्सो बी ऑपोजिट साइड्स. सो अगर हमारे पास और क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 ही पेयर बनते हैं ऑपोजिट साइड्स के. एडजेसेंट के 4 पेयर होते थे, राइट? ऑपोजिट ओनली 2. एंड अगर वो दोनों पेयर 2 पेयर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन क्या करेंगे भाई? देन वी फाइंड द डायगोनल्स. ठीक है. क्यों? बिकॉज अगर ऑपोजिट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं देन इट मे बी अ रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल भी हो गया. यही ऐसे ही होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड इट मे बी ए पैरेललोग्राम एज वेल ना. उसमें भी तो वही होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. द ओनली डिफरेंस इन दीज टू इज द एंगल. एंड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन नॉट फाइंड द एंगल्स. एंगल से निकलता है भाई. डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस, लेंथ निकलेगी. यू कैन नॉट फाइंड क्यों कितने एंगल पे बना रहे हैं वहां पे, राइट? ओके. सो इसलिए हम क्या करेंगे भाई? वी विल फाइंड द डायगोनल्स. नाउ व्हाट इज अ डायगोनल? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द ऑपोजिट वर्टेक्स. मतलब A को C से ज्वाइन कर दो, एक लाइन सेगमेंट मिल गया AC. दिस AC इज कॉल्ड अ डायगोनल. एंड सेकंड D को ज्वाइन करो B से, that is also the second diagonal. So there will be 2 diagonals. तो हमें फाइंड करने हैं दोनों diagonals. ठीक है. ये diagonals हमको एक और कंडीशन में फाइंड करने पड़ते हैं when all sides are equal.
ऑल साइड्स का मतलब समझ में आ गया भाई, चारों साइड्स इक्वल आ जानी चाहिए। नाउ अगेन ऑल साइड्स आर इक्वल अगर होती हैं देन इट मे बी ए स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है भाई, राइट। एंड इट मे बी ए रोम्बस एज वेल, वहां भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगेन व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू इज द एंगल्स। Square has all angles of 90 degree, just like a rectangle, but rhombus will not have. Okay, so all sides equal आए तब भी हम क्या करेंगे, diagonals को find करेंगे। diagonals दो हो गए, that simply means we have to apply the distance formula 6 times. Yes, 6 बार हमको distance formula apply करना पड़ेगा to identify the exact type of the quadrilateral in this condition. Okay. So, two pairs of sides opposite sides equal आते हैं, diagonals unequal हो जाते हैं, diagonals will not be equal, तब ये बन जाएगा एक parallelogram, because rectangle में diagonals equal होते हैं। So in this condition we will get the quadrilateral as a parallelogram. Okay? अगर two pairs of opposite sides equal आ गए तो और साथ में diagonals भी equal आ गए, ठीक है। So if two pairs of opposite sides are equal and the diagonals are also equal, then it becomes a rectangle in this condition. आगे यहां जाते हैं भाई, we have 2 points again, all sides equal and diagonals भी equal, then square बनेगा, because square में भी diagonals are equal. So in this condition it becomes a square. And यानी कि बच गया कौन, रोम वाला भाई साहब, रोम की बस, राइट, rhombus. So it is a rhombus when we have all sides equal and diagonals unequal. Okay, so if you can understand this flow chart, you can easily identify the type of quadrilateral by applying the distance formula. ठीक है, हमको 6 बार अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है तो बहुत कम एग्जाम में पूछते हैं। यू विल बी आस्क्ड these kind of questions only, so you have to apply the formula 6 times, ठीक है। but it takes hardly 3 to 4 minutes only if you have very good grip over squares, addition, subtraction of integers and all, ठीक है। so now let us take an example to understand how do we actually apply this distance formula to identify the quadrilaterals type. So we have the example here. It says that again identify the type of quadrilateral formed by A, B, C and D, and this is very important, taken in order. Taken in order का मतलब है कि A, B, C, D ही है quadrilateral का नाम। So we start with A, B, C, D. आप इसको ऐसे नहीं कर सकते A, C, B, D, right? तो वो order बदल जाएगा। So it is given that A, B, C, D. So in that order only we have to take the given points. Okay. Now one more point. There is one more special kind of quadrilateral called trapezium. Yes, trapezoid or trapezium, right? So this quadrilateral cannot be identified by applying the distance formula, because the definition of a trapezium is what? Any quadrilateral with one pair of opposite sides as parallel sides, right? अब भाई parallel है कि नहीं है, we cannot identify by applying the distance formula, because length of two lines or two line segments will not tell us if they are parallel or not. That's why we do not apply, or we cannot apply the distance formula to find if a quadrilateral is a trapezium or not. Okay, fine. So in this quadrilateral we have 4 sides. First AB, BC, CD, DA. हमारा काम क्या है भाई? Apply the distance formula and find all the 4 sides. Okay, I have already done this, right? If you want to do it yourself, you may pause the video, hide this, and find out the side. But these sides we can easily see. AB is 50, so root 50. So this is root 50. Okay. Then BC is 32, root 32. Then CD or DC is root 20, root again 50, sorry, and then AD is root 32. So what do we see? We see that pairs of opposite sides are equal. मतलब it may be either a rectangle or it may be a parallelogram. But actually है क्या ये? वो हमको बताएंगे कौन? Diagonal भाई साहब, ठीक है? So let us find out the diagonals. So diagonals means joining the opposite vertices.
आमने सामने वाले. So AC becomes first diagonal and PD becomes the second diagonal. And I hope you know what to do. Yes, you pause the video here and find out AC and BD at your own, and then I'll tell you the actual answer. Got your answers? Yes, I'm sure you did not cheat for that. The answers will be root 82 units. When we apply the distance formula to find the diagonals, you will get square root 82 units, and both diagonals are equal to each other. So we see that opposite pairs of sides are equal, root 50, these two sides, and root 32, the other pair of opposite sides. And diagonals are also equal. Then it means what? Yes, it means the quadrilateral is a rectangle. It is a rectangle which has all the pairs of, opposite pairs of sides equal, as well as both diagonals are also equal. This is the way we apply the distance formula to identify the type of a quadrilateral. I'm sure you have taken a note of this example, as well as the most important thing in this video is that flow chart. How do we identify the type of quadrilateral? First we find the four sides, becomes a kite अगर दो adjacent pairs equal आ जाते हैं तो. If we have opposite sides or all sides equal, then we find the diagonals also, and the diagonals will confirm whether a quadrilateral is a rectangle or a parallelogram if opposite sides are equal, and whether it's a square or a rhombus if all sides are equal. Alright, so that's it in this video. I'm sure you have learned this topic of identification of the quadrilaterals using the distance formula. Alright, thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel. And as usual, stay connected.